एनएसए अजित डोभाल को भेटिले रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग रे 1-to-1 बैठक रे दुहे आलोचना करिसेंती। यूक्रेन सह युद्ध बंद और शांति आलोचना उपरे कथबार्ता होइथिबा कुहा जाउछि। सेहिपरि द्विपाक्षिक सुरक्षा को नै डोभाल पुतिन आलोचना करिथिबा भी सूचना मिलिछि। जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल रूस गस्तरे जाइछंती। ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस हाई लेवल सुरक्षा अधिकारी बैठक में जोग देबाकु जाइछंती डोभाल। पूर्व पुतिन कहिथिले यूक्रेन सह शांति आलोचना रे भारत चीन और ब्राजिल मध्यस्थता करि परिबे। तार किछि दिन परे एनएसए डोभाल सेंट पीटर्सबर्ग रे पुतिन को सह साक्षात आलोचना को नहीं सारा विश्व रे चर्चा आरंभ होइछि। अधिक आलोचना पाई वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्रा आम सह रहिछंती। डॉक्टर मिश्रा आपनको ओटीवी को स्वागत। कौन कहबे बैठक वर्तमान समय रे केते गुरुत्वपूर्ण जेतेबेले निजे पुतिन आह्वान करथिले जे भारत भली देश चाहिले शांति फेरिबो सेतेबेले डोभाल और पुतिन को मध्य रे ये आलोचना जहां कुहा जाउछि युद्ध बंद प्रसंग रे ही आलोचना होइछि। शांति फेरिबो कि श्रीयुत मिश्र? तो समस्त तो चाहती शांति फेरू किंतु इट इज इजियर सेड देन डन। जो मीटिंग वर्तमान होउछि दिस इज द सेकंड स्टेज of an attempt to bring in some kind of negotiated settlement to the conflict between Ukraine and Russia. या पूर्व जो दीटा visit Indian Prime Minister करथिले, one to Moscow in July and the second one last month to Ukraine. That was to assess the political preparedness of both the leaders in terms of their military fatigue and political to come to a negotiated settlement. तापरे ही वर्तमान एनएसए अजित डोभाल is now on the details. वर्तमान Russia being the dominant party in the conflict, Russia's security interest needs to be assessed because any kind of peace proposal that has to cater to the security requirements of both the countries. So Ajit Doval being the national security advisor of India, he has been pressed into action because of his long diplomatic and experience, security service experience, because unless the security requirements of both the countries are addressed, there cannot be any further breakthrough or progress towards peace. So Bartaman ita कहबा बड़ा difficult जे केबे शांति फेरिबो, but any attempt towards bringing peace is always laudable, and India is playing its role, active role in bringing an end to this conflict. So at least I would remain optimistic. किंतु भारतर आभिमुख्य खास करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई रे यूक्रेन गस्त करिबा, ता पर मासरे अर्थात अगस्त रे रशिया गस्त करिबा एवं ता परे परे पुतिन एभली अपील करिबा भारत को शांति पाई बा मध्यस्थता पाई डाकिबा, ये कोठ ना कोठी हमें कहि परिबा जे भारतर गोटे प्रकार भी उद्यम रहुछि जे शांति फेरु। Definitely, Bharat, India, historically, India has been appreciated, India's role has been appreciated as a great mediator. It starts from 1950s when Indo-China conflict India had mediated, the Korean crisis India had mediated. There are plenty of instances where India is called upon to mediate in such conflicts. So it is a traditional role that is put upon India by dint of the fact that भारत केवल शांतिर वार्ता दिए नहीं, शांति चाहे जहाँ की आभिमुख्य नुहे कामरे करी देखैबा को प्रयास करे। किंतु डॉक्टर मिश्र आ भितरे जो तीनिटी देश को पुतिन मध्यस्थता पई आह्वान दउछंती, प्रस्ताव दउछंती, ता भितरे भारत, ब्राजिल एवं चीन भी रहिछि। याको आपण केमती देखुछंती? ये आलोचना जदि आगो को जाई कि होउछि किभली रहइबो भारत चीन रो संपर्क जहाँ किभली रहि पारे आभिमुख्य? No, this particular statement was made in a very interesting context. Bartman Ajit Doval jo jaichanti Moscow, he has gone on a meeting of BRICS countries. Is an arrangement that is so these are the countries, and South Africa. This is a grouping. So jo countries are non-nationally, they are parts of BRICS. So BRICS is an arrangement which you can see is a counter arrangement to the US hegemony in the global political and economic order. So Putin is strategically trying to form an alliance around BRICS, or trying to project that BRICS is a potent organization. BRICS re China achi, India achi, Brazil achi, South Africa achi.
in order to develop a group solidarity within BRICS or form an identity, Putin had made that statement that Brazil, China, and India, and the other countries, obviously Russia and South Africa. So BRICS is complete. So that is the context in which it was said that India, Brazil, and China can mediate, because Putin wanted this BRICS idea to come up, in a prominent manner, which is a counter identity to the World Bank, IMF, tar counter BRICS is being formed. So this is a strategic statement. ये सब भितर देखिबार कथा जे डोभाल एवं पुटिन को भितर ये आलोचना परे खास करी जो शांतिर रास्ता फिटिबो बोली कुहा जाउछि से दिगरे केते आगो को ये बैठक सहायक होछि आगो को कोन पदक्षेप लिया जाउछि ता उपरे नजर रहइबो। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा हम सहित अधिक आलोचना पाई।